Hello, all. Welcome to the vlog. Just wanted to let you know that this vlog only has the second half of my second day in Vietnam. Before that, I did not really record anything. But at the end of the vlog, I've just put some clips of my first and the second day. Hi, guys. So, this is my second day in Vietnam. I was extremely sick the past 6 or 7 days. We are right now in Vũng Tàu and we are probably now just going to look at the market in Vũng Tàu. So let's do that. अभी जस्ट हम लोग ये स्ट्रीट पे आए हैं वुंग ताओ में और काफ़ी विंडी क्लाइमेट है वुंग ताओ में कंपैरेटिवली इंडिया के कोस्टल सिटीज से। इसके लिए मैंने माइक हाथ में पकड़ा है ताकि आपको आवाज़ आए। लुक एट दिस, ये एक स्ट्रीट है वुंग ताओ शहर में और आपको मैं अभी कैसा दिखता है वो दिखाता हूँ। हम लोग ही स्ट्रीट में ही अब जा रहे हैं। लेट्स सी कैसा है अंदर। तो जो भी आपने देखा, दिस इज़ हाउ पीपल लिव इन वियतनाम, और रादर से वोंग टाओ द टाउन दैट वी आर इन, जहाँ पे अभी हम लोग हैं। वियतनाम इज वियतनामीज फ्लैग्स हैं यहाँ पे। दिस डोर ऑल्सो इज वेरी नाइस, ब्यूटिफुल। आई थिंक वी आर इन्वेडिंग पीपल्स प्राइवेसी, बट दिस इज वेरी ब्यूटिफुल। This is an empty plot, I think. This is an empty plot. पता नहीं आपको आवाज़ आ रही है नहीं, बट बहुत विंडी है। जैसा मैंने आपको बताया यहाँ का एटमॉस्फेयर। Hey buddy. So this is one of the streets where we are walking right now. Again हम लोग अभी मेन स्ट्रीट पे जाएंगे and then we'll see if we can actually buy something or not. But yeah, this is Vietnam. This is Vung Tau. Let's say Vung Tau every single time that we address the place, because we'll be in Ho Chi Minh in one day and then we'll see. You can see the Vietnamese flag. Just to give you an information, Vietnam is a communist country. They So if you don't know the story of North Vietnam and South Vietnam, we are currently in South Vietnam, but northeastern Vietnamese people wanted the country to be communist, and South Vietnam people, they wanted the country to be democratic, and that's how America came into the support of the South Vietnamese people, and China and Russia, they were supporting the North Vietnamese people. So that is the story, and that is how the whole war happened. And um, you guys might only have heard about Vietnamese people fighting America, but that's a long, long story. So you should go read about it. तो अभी हम लोग जो मेन स्ट्रीट पे है, ये भी आप देखिए, that's one guy going to his school, I guess. Oh, look at this guy, very, very little, but he's smoking, not showing his face. तो ऐसे स्ट्रीट दिखता है वियतनाम में। वियतनाम हैज़ लेफ्ट हैंड साइड ड्राइव, तो वो हमारे लिए थोड़ा वियर्ड है इंडियंस के लिए, बिकॉज हम लोग जब ऐसे वॉक करते हैं तो राइट साइड जब वॉक करते हैं तब सामने से गाड़ियाँ आती है, बट वियतनाम में दिस इज हाउ द व्हीकल्स आर
going because left hand drive hai. So normally it is advisable to walk on the left here when you are moving towards the traffic. एक और interesting चीज, one more most interesting thing is that in Vietnam has 87% of people just driving these two wheelers. So you will see a many two wheelers. Like people will just be on two wheelers, and a lot of people on two wheelers will be smoking and doing their stuff. So that's very common here. I think it's one of the largest populations of two wheeler uh, drivers in the world, Vietnam. So even look at this. But one thing that you will realize is that Vietnam is very clean. And this is not a very famous place that we are in, Vung Tau. This is not very famous. So, but still, people are very, you know, they understand that they need to keep their places very clean. तो आपको उतना ज़्यादा डस्ट या उतना ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट इधर उधर पड़ा हुआ नहीं दिखेगा. तो हम लोग यही स्ट्रीट पे वॉक कर रहे थे और प्रवीण ने स्पॉट किया कि ये वाले स्ट्रीट के एंड पे देयर इज अ बीच, लाइक यू कैन गो टू द ओशन. तो हम लोग वहीं वॉक करके जा रहे हैं. सॉरी फॉर दैट. तो हम लोग वहीं वॉक करके जा रहे हैं. आई विल शो इट टू यू. सो वी कैन नॉट क्रॉस राइट नाउ बिकॉज इट्स रेड. As soon as it goes green we will. Chalo, let's go. So this is a committee office here. This is the Communist Party's office. This beautiful building is a clinic. I think this is one of the nicest buildings I've seen. Also, smoking also is big. Like लोग बहुत सिगरेट पीते हैं यहाँ पे. मतलब काफी सिगरेट पीते हैं लोग यहाँ पे. हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं. Like we are going to end now. हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए. स्ट्रीट अभी ऑलमोस्ट एंड होने वाला है. एंड इट इज सो ब्यूटीफुल. अभी मैं आपको दिखाता हूँ. You can you can get your cigarettes from places like these on the road. Look at this. This is how the street ends. That same shopping street. This is how it ends. There are so many boats. There is a military ship right there. And this is how the almost a marine drive feeling. But way cleaner, less people, extremely blue water. Yeah. Hi, so we wanted to shop. We did go through a lot of things in the street, but then we realized that Vung Tau is not the place to shop for us because we will be in Ho Chi Minh tomorrow, and I think everything like for shoppers, because Vung Tau is not a place where everybody will come. Uh, so I think we will do our shopping, whatever shopping expedition that we want to do in Ho Chi Minh, which is tomorrow. And now we've come to a place called what is this, Highlander or Highlands coffee place. So this is how the place looks like. It's a basic cafeteria place, but this is what we got. This is some apple juice. We did not get any coffee for now, and we got
some breast with cheese and chicken. So let's see how that is. We came back from the Wongtao expedition. This is when it was went to the street, and this is the hotel that we are in. So this is the hotel that we are in. It's a big ass hotel. But the name of the hotel is Pulma, like Pullman, but you call it Pulma, I think, in Vietnamese. So just entering the hotel, I'll go to the room. So this is the interiors of the hotel. So like this is like our campus, NMIMS Mumbai campus. But yeah, so this is how the hotel is. Hello guys, रात के अराउंड 10:30 बज रहे हैं वोंगटाओ वियतनाम में. um, and I just thought I'll, you know, go out, see at this time कैसा दिखता है, क्या होता है वियतनाम में. So look at this. So that is the hotel where I am currently staying. So that is the hotel, Vung Chau Conference Center, and the hotel is Pullman, Pulma. I think that's how people say it here. And this is the street right in front of us. So उस तरफ बीच है. I think हम उधर जाएंगे एक बार. And then probably will come. मैं थोड़ा ही आ गया है यहाँ पे. काफ़ी कैफ़ेज़ मुझे पता नहीं बोलेंगे या नहीं, बट यहाँ पे ऐसे रेस्टोरेंट्स है, वहाँ पे लाइव फूड है. व्हेन आई कम बैक प्रॉब्ली मैं उस तरफ से आऊँगा, तब मैं आपको दिखाता हूँ. एक वैसा ही लाइव लाइव एनिमल्स वाला होटल मेरे सामने है, मैं आपको दिखाता हूँ. सो यहाँ पे जो भी है लाइव एनिमल्स, लॉबस्टर्स, फिश, क्रैब्स, वो आप डायरेक्टली उनको बोल सकते हैं. दे विल इमीडिएटली कुक एंड गिव इट टू यू. मैं ऑलमोस्ट बीच के पास पहुंच गया हूँ. बहुत ज्यादा तेज हवा है यहाँ पे, बट अभी कुछ दिख नहीं रहा है. आई थिंक 10 बजे बाद यहाँ पे जो बड़े लाइट्स है, पोल लाइट्स, वो शायद बंद हो जाता है. उसकी वजह से अभी कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे. This is one interesting sculpture building. I don't know. I don't think I will call it a building, but something जो आपको वोंगटाओ में मिलेगा. So I think it's just a tourist attraction. इसकी just पीछे ocean है. Like it's a complete. Just after this is the beach where people can, you know, take a dip, do a nice. People also surf here. I have noticed people, you know, surfing a little. The waves are enough for like mediocre surfing. अब बीच साइड पे कुछ तो गाना वाना चल रहा है, मतलब लाइव म्यूजिक चल रहा है. देखता हूँ वहाँ पे जाके क्या है एग्जैक्टली. सो गाइस, मैं आ गया हूँ बीच साइड पे. एंड यहाँ पे कुछ लोग गा रहे हैं, स्क्रीन में लिरिक्स पढ़ के गाना. साइड से शूट करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ. यहाँ पे देखिए. Another interesting thing at here, Vung Tau City Beach, there is one this guy painting people's picture. So you can come here and get yourself painted, or actually sketched, not painted. But yeah, that's also one thing. So मैं ऑलमोस्ट पहुंच गया हूँ बीच के पास. आपको दिखाता हूँ बीच रात में कैसा दिखता है. Hey again, so post this, you will just see videos where I'm not talking about the day before I started vlogging. So
if you want to enjoy that, just do that, or you can completely skip it as well. But stay tuned. This is like the most basic vlog that I could make on the first day that I started actually recording. But trust me, the next two videos are going to be amazing. So that you can release all your things. Okay, if you cross the ocean, another. So this amusement park is going to be up there. Suppose that we have in Bangalore, that white one. And I love this place because the crowd is nothing. Ancient temple. हाय गाइस, तो मैं बीच साइड से वापस आ चुका हूँ और
आज भी मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है. आई स्टिल हैव द इन्फेक्शन इन माई थ्रोट. सो अराउंड 11 बज गए, 11:10 हो गए वियतनाम में. आई थिंक आई बी क्लोजिंग दिस वीडियो फॉर नाउ. एंड कल हम जा रहे हैं हो ची मिन सिटी. कल परसों और उसके अगले दिन हम लोग वापस फ्लाई करेंगे इंडिया. बट ऑलमोस्ट साढ़े नहीं ऑलमोस्ट 2.5 दिन हमारे पास है हो ची मिन में. एंड दैट इज वेयर द मोस्ट ट्रैवलिंग विल हैपन फॉर अस, बिकॉज यहाँ पे हमारा इवेंट भी था. वो हमने इवेंट भी आज हाफ ऑफ द डे इवेंट अटेंड करने में हमने लगाया. सो नाउ दैट इज डन. Next 2 days are going to be very exciting. So watch the other two videos. Other two, one, I don't know how many videos are people in the week, but yeah, watch the other videos. Bye bye. See you. Yogvardhan signing off. Yogvardhanam actually.